Hello everyone. Today our subject transportation engineering. We already discussed first unit, that is in introduction part of transportation engineering, where we discuss about waterways, roadways, railways and airways. Now, here second unit, the name of unit is railway engineering. In this unit, we have to conclude all initial to final, in the sense railway engineering alignment and gauge to track maintenance 2.1 to 2.6 from syllabus. We conclude all each and every part of railway engineering. This whole unit is conclude in within 15 to 18 hours, or you can say lecture, 15 to 18 lecture, about 15 to 18 lecture. Okay, let's turn out with 2.1. Before 2.1, that is alignment and gauge, we have to discuss what is railway engineering. If we talk about railway engineering, then some points are in your dashboard. That is, railway engineering is an important discipline of transportation engineering in which we study about construction, development, design and maintenance of railways. इन हिंदी, रेलवे इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण भाग है किसका, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का. किस तरह से, क्योंकि हम पहले ही पहले लेक्चर में या पहले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अकेला ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन के भी पार्ट हैं. ट्रांसपोर्टेशन भी किसी 4 चीज़ों से बनता है, जो कि आपका वाटरवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है एंड रोडवेज है. ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रेलवे इंजीनियरिंग में, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, डिजाइन और मेंटेनेंस. किसके लिए, रेलवे के लिए. नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, रेलवे ट्रैक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन बलास्ट एंड सबग्रिड. मतलब रेलवे ट्रैक जो एक कॉम्बिनेशन है किसका, रेल्स का, जो कि फिट होता है किस पे, स्लीपर पे, और रेस्टिंग होता है, स्लीपर किस पे रेस्टिंग होता है, ब्लास्ट पे और सबग्रेड पे. ठीक है, अब क्या होता है रेल्स, क्या होता है स्लीपर, ब्लास्ट क्या होता है और सबग्रेड क्या होता है, बारी बारी करके हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. रेल्स जो है, आप कह सकते हो ट्रैक. ट्रैक इज अ सिनोनिम्स ऑफ रेल्स इन रेलवे इंजीनियरिंग. ओके, fitted on sleepers. Sleepers, nowadays sleepers are made pre-stress concrete. It means pre-stress concrete or post-stress concrete. It is reinforced concrete, from which in earlier days we use a wood sleeper. Now next one is resting on blast. Blast means it's coarse aggregate, not fine aggregate. You have already read about the blast or coarse aggregate or fine aggregate in building construction, concrete technology in third semester. Okay, blast is a coarse aggregate. And subgrade, what is subgrade? Subgrade is a layer of soil in which the blast or embankments are developed and the sleepers are on upon and tracks, or you can say rails are fitted on sleepers. This whole mechanism is called railway track. Okay, now third point, essential functions of railway track is to support and guide the vehicle that run over it. Essential functions of railway track is to support and guide. It means vehicles in the sense, यहाँ पर vehicles कौन है, हमारा रेल है, ट्रेन है, हमारा ट्रेन है, यहाँ पर हमारा व्हीकल जो ट्रैक पे चलता है, वो पूरा सपोर्ट करता है, गाइड करता है कौन, हमारा ट्रैक, हमारा रेल, हमारा रेलवे ट्रैक, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल फिटेड स्लीपर रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट और सबग्रेड. ओके, नेक्स्ट वन, द सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन टू रेलवे मे बी डिफाइंड एज द वे विच इज मेड अप ऑफ रेल्स. इट इज द परमानेंट वे. रेलवे इज द स्पीड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
यस, द फोर्थ पार्ट और फोर्थ पॉइंट सेज, ये जो है सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन अगर बात करें किसका, रेलवे का, तो ये किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये बना हुआ रहता है रेल से, बिल्कुल सही है, रेल से बना हुआ रहता है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है जो फिटेड होता है स्लीपर से, स्लीपर भी किसी चीज़ से टाइट होता है, बाइंड अप होता है, ब्लास्ट होता है, एम्बैंकमेंट्स पे रहता है, और भी सबग्रेड्स वगैरह, ये सारा मैकेनिज्म जो है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्ट होता है, उसको पीवे बोलते हैं। एंड पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट एंड वे, परमानेंट वे। रेलवे इज द स्पीड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस, रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में स्पीड के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन में तो एयरवेज भी होता है, बिल्कुल सही, बट अगर हम कंपेयर करें रोडवेज से तो रेलवे इज greater or much more speed, has much more speed than roadways. Okay, now this is some figure or you can say diagram of cross section of track embankments. This is also a track, cross sectional of a track cutting of double line. This is also a cross section of track, a single line. You can see that slipper, embankments, rails, stack, all each and every essential parts are defined or shows in diagram. Here it is double line with electric traction. It means, what is electric traction? It means without diesel. It means electric engine. Now this is also a double line cutting. This is very important figure or diagram, you can say. Okay, you can say this is coning of wheel tread. This is the combination of axles which is on the track or sleepers, you can say. This is the axles or wheel flange of railway engine. Wheel centrally placed on smaller diameter of cone, etc. Straight track, right curve. It is the combination or you can say a well diagram of wheels of railways. Now, as per syllabus, you should read about the alignment of gauge. This is classification of Indian Railway. What is classification of Indian Railway? Based on routes and based on speed criteria. Now, classification of Indian Railway are divided into two parts, that is based on routes and based on speed criteria. Okay, now based on routes, what is based on routes and based on speed criteria? First of all, we discuss about based on routes. First one, trunk routes. Second one, main line. And third one is branch line. Further, we have discussed each and every components of based on routes and based on speed criteria. First of all, we have initially discussion or overview of classification of Indian Railway. Now, second one is the following 6 routes is broad gauge and 3 routes are classified in trunk routes. Broad gauge, here 6 examples or you can say 6 routes divided in the broad gauge. These are the examples. Now, meter gauge. These 3 are examples of meter gauge. Further, we have discussed the zones, which is different zones of Indian Railway. Here, some examples: Eastern, Southern, North, Southern Railway, Central Railway, Western, Southeastern Railway. These are the different zones of Indian Railways, which we have to discuss in further videos or lecture. Okay. Now, the most important word, which is just accordingly to your syllabus, that is alignment. What is alignment? Here, alignment is defined as alignment of a railway line refers to the direction and position gives to the center line of the railway track on the ground in the horizontal and vertical planes. Means the alignment, रेलवे का जो है अलाइनमेंट क्या है? रेलवे का एक लाइन रेफर्स किसका है? डायरेक्शन का, पोजीशन का। अलाइनमेंट को भी किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? इस तरह से कि वो डायरेक्शन देता है, पोजीशन देता है, किसका? सेंटर लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के सेंटर लाइन से हम किसी भी अलाइनमेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं ग्राउंड इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। हम बताएं अभी, वर्टिकल जो आपके आई साइट से बिल्कुल 180 डिग्री पे है और एक 90 डिग्री पे है आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना।
इससे अलाइनमेंट, आगे भी कुछ पॉइंट्स है उसको हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक इन द प्लान इंक्लूडिंग द स्ट्रेट पाथ एंड कर्व्स इट फॉलोज. नेक्स्ट हम भी पॉइंट बात कर रहे हैं. वर्टिकल अलाइनमेंट मीन्स द डायरेक्शन इट फॉलोज इन द वर्टिकल प्लेन इंक्लूडिंग द लेवल ट्रैक, ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व्स. मतलब हॉरिजॉन्टल जो है अलाइनमेंट, ये किसका डायरेक्शन का बात कर रहा है? रेलवे ट्रैक इन द प्लेन इंक्लूडिंग द स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट जो पाथ है मतलब हमारे, आप कह सकते हो लेफ्ट टू राइट, राइट टू टूवर्ड्स, ये भी बोल सकते हो. इस वाले पाथ को हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं. अगर हम डिस्कस करें वर्टिकल अलाइनमेंट का, तो यह क्या है? अप एंड डाउन, दैट इज ग्रेडियंट. ओके, इंक्लूडिंग प्लेन, ग्रेडियंट or and vertical curves are in the vertical alignment. Now, as per your syllabus, syllabus wants to discuss about factors governing rail alignment. What is the factors governing in rail alignment? These some examples or some points which is governed in rail alignment. First one, the alignment should be economical. Second one, availability of sufficient fund. Third one, the alignment should be short and straight. Fourth, the alignment should be safe for traffic operation. And last one, gauge of a track. Yes, the alignment should be economical. It means alignment ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, हमको एस्टेब्लिश में, कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि मेरे बजट के बाहर है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड, सही बात है, फंड रहेगा तभी तो आप कोई भी ट्रैक का निर्माण या करवा सकते हो. ठीक है. द अलाइनमेंट शुड बी शॉर्ट एंड स्ट्रेट. द अलाइनमेंट जो पाथ है वो छोटा छोटा करके हम रेलवे ट्रैक को जोड़ रहे होते हैं. देखोगे आप छोटे छोटे ट्रैक को, फिर हम ट्रैक को ट्रैक से जोड़ के हम एक लंबा ट्रैक बनाते हैं. ठीक है. तो ये शॉर्ट होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए. द अलाइनमेंट शुड बी सेफ फॉर ट्रैफिक ऑपरेशन. जो अलाइनमेंट होता है वो सेफ होना चाहिए. किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए. ऐसा नहीं है अलाइनमेंट हम इतना कर्व दे दिए कि एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ गया, बिल्कुल नहीं. गॉज ऑफ अ ट्रैक, गॉज हम बात कर रहे थे, आगे करेंगे. गॉज डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय गॉज डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय गॉज, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द गॉज डिस्टेंस इन डिफरेंट रेलवे ट्रैक. ओके, फर्दर वी डिस्कस. नाउ this is one is rail gauge, you can say rail gauge also. Okay, gauge, this is the spelling of gauge, or you can say gauge. The clear horizontal distance between top of inner face of two rail on the railway track is called gauge of rail or gauge distance. It means जो क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस है किसके बीच में? दो जो टॉप फेस है रेल का, उसके इनर पार्ट. आप यहाँ पर नीचे फिगर में आप देख सकते हो कि पांच ट्रैक हैं. लेकिन 5 ट्रैक कैसे हो सकता है? किसी एक इंजन को सफिशिएंट चलने के लिए 2 ट्रैक की ज़रूरत होती है, 2 रेल्स की ज़रूरत होती है सफिशिएंट, मतलब सुचारू रूप से चलने के लिए. यहाँ पर 5 क्यों हैं? यहाँ पर 5 इसीलिए हैं कि अलग अलग गॉज डिस्टेंस को समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर. ओके, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो दैट इज़ नैरो गेज, और विड्थ हो जाता है इसका 762 mm एंड 610 mm इसकी डिस्टेंस हो सकती है. अगर हम मीटर में बात करें तो दिस इज 7.62. ओके, 7.62 mm है, सेंटीमीटर में 76.2 और मीटर में 0.76. ओके, 0.762. ओके, 0.610. This is the distance in meter, that is in distance in centimeter, or this which is drawn or which is clearly mentioned in figure, this is in mm. Okay, what is the length of meter gauge? This is 1067. What is standard gauge? 1435, and broad gauge it is 1676 mm. Okay, this whole dimension are in mm. Okay, now the different gauge can broadly be divided into following 4 categories. One is missing. One is why missing? That is the standard gauge. We can say standard gauge is not accurately. It is mentioned in only for the purpose of standard maintenance. Okay, or clearly here is 3. That is broad gauge, meter gauge, or narrow gauge. Okay. First of all, we have discussed in broad gauge, which are here. Width 1676 mm to 1524 mm. Okay,
or another is in feet. You can also write in feet dimension. In Indian, normally broad gauge is preferred. इंडियन रेलवे में जो अभी यूज हो रहा है डायमेंशन, वो ब्रॉड गेज से लिया गया है. इट इज़ मोस्ट सुटेबल इन प्लेन एंड डेंस पॉपुलेटेड एरिया. ये कौन से के लिए बहुत सफिशिएंट पाया जाता है या बहुत धड़ल्ले से चल रहा होता है, सूटेबल है किस चीज़ के लिए, जहाँ पे प्लेन हो, जो एरिया हो, नॉट इन अ हाई ग्रेडियंट और अंडुलेशन, ठीक है, और डेंस पॉपुलेटेड, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में आदमी इंसान रह रहे होते हैं या पॉपुलेशन जहाँ का ज़्यादा है, ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ब्रॉड गेज आसानी से यूज होता है. इट इज़ ऑल्सो अडॉप्टेड वेयर मोर ट्रैफिक इंटेंसिटीज़, सेम एज इट इज़, जहाँ पे ट्रैफिक इंटेंसिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पे हम ब्रॉड गेज का यूज करते हैं. इट इज़ सुटेबल व्हेन सफिशिएंट फंड इज अवेलेबल. ये कब हमारे लिए सफिशिएंट है या सुटेबल है, जब हमारे पास फंड अवेलेबल हो, पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट बोल रहा है. ओके स्टूडेंट्स और एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड यूनिट एंड सेकेंड लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ओके, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड what is railway engineering, how we define railway engineering, alignment and gauge, what are the different types of gauge mentioned in meter gauge, broad gauge or other one gauge. First of all we discuss in first one, that is broad gauge, and also we have discussed what are the types of Indian railway, classification of Indian railway based on routes, based on speed criteria. Also we have discussed in these videos what is the classification of Indian railway in zones. You can say zones of Indian railways. Okay, in further videos or next lecture we discuss next that is about second one and third one, that is meter gauge also. Okay, thank you.